Hello students, good morning. Now here we start chapter 5, okay, accounting equation. Okay, so we learn journal entry. So it is a part of journal entry, okay. Accounting equation is part of journal entry, okay. So whatever accounts we are recorded, okay, whatever accounts we are recorded, the same is recorded here, okay. So यहाँ पे कोई डिफरेंस कुछ भी नहीं है, जस्ट यू हैव टू शो द इफेक्ट्स इन बैलेंस शीट, ओके. तो उसका इफेक्ट क्या होता है बैलेंस शीट में, जस्ट यू हैव टू लर्न इन दिस इक्वेशन, ओके. सो यहाँ पे आप कोई भी आप ट्रांजेक्शंस लोगे तो उसमें अकाउंटिंग इक्वेशंस आपका जो वो सेम ही रहेगा. सो यहाँ पे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन होगा दैट इज A इक्वल्स टू C प्लस L, ओके. हियर A इक्वल्स टू C प्लस S. इफ यू आर टेकिंग एनी टाइम ट्रांजेक्शन द इक्वेशंस कांट चेंज, ओके. इक्वेशन आपका क्या होगा, A इक्वल्स टू C प्लस L ही रहेगा, ओके. A इक्वल्स टू C प्लस L ही रहेगा, इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं, ओके. सो इन नंबर वन कॉमन से बिजनेस विद कैपिटल कितना है, 80,000 है, ओके, बराबर. सो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो किससे, कैपिटल से, 80,000 से, ओके. तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी आपकी, दैट इज अ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ओके. हियर डेट ट्रांजेक्शन नंबर 1, डेट इज नॉट गिवन, सो 1. हियर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ओके, टू कैपिटल अकाउंट. नरेशन being started new business, okay. So यहाँ पे एंट्री क्या होगी आपकी, when started new business, entry is 80,000 because cash account debit 80,000 to capital account here 80,000, okay, बराबर. तो टू अकाउंट्स कौन से आएंगे यहाँ पे जो चेंज हो रहे हैं, कैपिटल और कैश और कैपिटल, ओके. तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कैश कम्स इन, ओके. तो आपको कैश यहाँ पे लिखना है, कैश अमाउंट इज ₹80,000, ओके. और जो कैपिटल जो है, कैपिटल का अमाउंट कितना है, 80,000 है, तो आपको 80,000 यहाँ पे लिखना है प्लस 0, ओके. सो टोटल इज हियर इक्वेशन फॉर A इज इक्वल टू C प्लस L. तो यहाँ पे क्या होगा आपका 80,000 ही होगा, और यहाँ पे भी आपका क्या होगा 80,000 ही होगा, ओके. 80,000 प्लस 0. सो बोथ द इक्वेशन इज इक्वल, ओके. सो एक खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, इसको क्लोज करना है, ओके. उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन. नाउ हियर इट इज गिवन ₹20,000 डिपोजिटेड विद बैंक एंड ओपन अकाउंट, ओके. ₹20,000 डिपोजिटेड विद बैंक एंड ओपन अकाउंट. तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹20,000, ओके. एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज ₹20,000, ओके. यहाँ पे आपको एंट्री लिखनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अमाउंट कितना होगा यहाँ पे, अमाउंट इज 20,000, ओके. अमाउंट इज 20,000, ओके. सो नरेशन क्या होगा, being cash deposited in the bank, okay. So amount is here ₹20,000 being cash deposited in the bank. Amount is 20,000. So here two accounts are affected, that is the cash and bank, okay. So here cash 20,000 is deposited in the bank, so cash goes out, okay. So bank is receiver here, so bank account debit to cash account. So here cash is less by 20,000, so cash account 80,000 minus 20,000 balance, so remaining is 60,000, okay. And bank is increased by 20,000, so record here 20,000. So total is here 80,000, and here there is no change in capital as it is, record here capital is 80,000 plus 0. So total is here 80,000 plus 0. See here equation is same, okay. Here assets is 80,000 and capital is also 80,000, okay. So here transaction number 2 is finished, okay. Transaction number 2 is finished, okay. Next one, that is the third one.
Goods of rupees 40,000 purchased from Himani on credit. Okay. Goods of rupees 40,000 purchased from Himani on credit. Amount is 40,000. Okay. So purchase account debit to Himani account. Amount is 40,000. So third one purchase account debit. Purchase account debit. Amount is rupees 40,000 to Himani account 40,000. Himani account 40,000. Being goods purchased from Himani rupees 40,000. Being goods purchased from Himani rupees 40,000. Okay. So now here in cash there is no change and amount is rupees 60,000. So record here cash account rupees 60,000. Bank there is no change, so record here bank 20,000. Now here purchase. Okay, so purchase means stock. Okay, so when we purchase the stock increase. Okay, so write down here stock increase by rupees 40,000. Himani is a supplier and she is called creditors. Okay, and creditors always comes in liability. Okay, so here total amount is 80 plus 40, that is 1,20,000. So record here 1,20,000. Capital amount is given here and that is 80,000 and plus Himani account. Okay, plus Himani account and she is creditors. Okay, and she is creditor. Here purchased by rupees 40,000. So here amount is total 80 plus 40 is 120 and here also 120. Okay, let's see now. Equation is proved. A equals to C plus L. So assets is 1,20,000. Capital plus liability amount is here 1,20,000. Okay, so transaction number 3 is over. Next one, that is fourth one. In fourth, it is given that goods of rupees 30,000 purchased on cash. So here entry is purchase account debit to cash account rupees 30,000. Okay. So entry is purchase account debit to cash account amount rupees 30,000. So fourth one, purchase account debit 30,000 to cash account 30,000. Narration being goods purchased on cash. Being goods purchased on cash. So here two accounts are affected with the transaction of fourth. Okay, purchase and cash. So cash is reduced by 30,000. So cash balance is 60,000 minus 30. Value is here 30,000. Okay. There is no change in the balance of bank. So record here bank amount by 20,000. Stock there is no. Stock is increased by rupees 30,000. Okay. Stock is increased by rupees 30,000. So stock value is 40 plus additional purchase 30. Total amount is here 70,000. Okay, but overall there is no change as it is amount 1,20,000. Okay, here there is no change. Capital is 80,000 and here Himani supplier creditors amount is 40,000. So here is 80,000 plus 40. Value is 120. Okay. So transaction number 4 is finished. Okay. Next transactions we are discuss in next video. So thanks a lot. See you. Bye. Okay.